इंसान कुछ भी कर सकता है इसके लिए, ड्रग के लिए इंसान कुछ भी कर सकता है। स्टार्ट क्या लिया था बेटा, कौन सी चीज ली थी? हेरोइन। हीरोइन ली थी जी सर। तो कितना दिन को इस्तेमाल करते थे बेटा? 1 ग्राम आधा ग्राम। आगे आगे मैंने फाइल स्टार्ट किया 1 साल, कम से करीबन 1.5 साल के बाद फाइल से फिर ये नहीं, उसके बाद मैंने इंसुलिन लिया, इंजेक्शन। हाँ, हेरोइन के इंजेक्शन लिया। रात सीर छी आमुद घर तो कर्मस काम चूरमुत माज होट। Then recently I heard, as you are saying, that we have more than 10 lakh people. This is an estimate which could be true and it could be more than that. Anger has overtaken grief at Sopore, 45 kilometers from Srinagar, after a drug addict son strangled his elderly mother to death on March 30. The shocked neighbors are demanding strict punishment for 32-year-old Shaukat Ahmed Ganai for murdering his 70-year-old mother Aisha Begum. They say Ganai has been involved in drug addiction for 15 years. Drug addict. Drug ये कंटिन्यू आसान मज गया ये ठीक अलबत्ता ये अकिस सत काम त करा चलावा गाड़ी रात तम छिटिंग कर्मस दोनस वचन मे तम आई आज काम कह तो पत गई काम तो रात सीर छी आमुद घर तो कर्मस काम चूरमुत माज होट। The Sopore incident has sent shockwaves across the valley. Kashmir has remained in news for all the wrong reasons. Militancy and long spells of unrest jolted the society. But such crimes were largely unknown. There's a massive upsurge in drug addiction and substance abuse in Jammu and Kashmir. According to the latest figures, the Union Territory has almost 1 million drug addicts. The Ministry of Social Justice and Empowerment said this in response to a query by National Conference Member of Parliament Hasnain Masoodi in the Lok Sabha. A national survey on extent and pattern of substance use in India was carried out by the Ministry of Social Justice and Empowerment through the National Drug Dependence Treatment Center of All India Institute of Medical Sciences. So the GMC Srinagar did a study in 10 districts and it revealed we had more than 6 lakh patients who were using substances of abuse. Then recently I heard, as you are saying, that we have more than 10 lakh people. This is an estimate which could be true and it could be more than that. Unfortunately, that's a real side of it, because as per the estimates also, we have gone beyond Punjab prevalence. Punjab is around 1.5%, 1.5%, and we have gone beyond 2% in opioid prevalence in our population in the UT of J&K. So obviously this is a worrying trend, because we have a lot of youngsters
We have a young age group population, which is right now in India. If I talk about it, is the highest number of youngsters are in India. So is true of Jammu and Kashmir also. We have the highest number of youngsters or young age people in our UT of J&K. This 25-year-old from South Kashmir has been a chronic heroin addict since last 4 years. He says drug addiction is widespread in Kashmir, and addicts like him are ready to beg, borrow, or even steal to get their daily dose of drugs. His marriage next month is the motivation for him to get rid of drug addiction. But the withdrawal symptoms are crushing. हीरोइन ली थी। तो कितना दिन को इस्तेमाल करते थे बेटा? 1 ग्राम आधा ग्राम। 1 ग्राम आधा ग्राम। तो उसकी कीमत क्या पड़ती है बेटा? उस टाइम तो 1500 में ग्राम में मिलती है। 1500 में ग्राम मिलती है। अभी कितने में मिलती है? अभी शायद 6000 का। 6000 का ग्राम मिलता है। तो इतना आप कहाँ से फिर पैसा जमा करके ये चीजें? उनका नहीं पता सर, आज मैं नहीं करता हूँ। नहीं, उस टाइम कैसे? वो तो 1500 उस टाइम का भी बहुत ज्यादा हो गया। वो तो 40,000 के करीब हो गया। कर रहे थे, मजदूरी कर रहे थे। तो 40,000 आप कमाते थे मजदूरी में? कहाँ कमा रहे थे सर, ऐसे ही फिर। अच्छा, जुगाड़ पे होता था। जुगाड़ पे करते थे तो फिर लेते थे। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता कितने टाइम के लिए आपने ये कंटिन्यू रखी? पहले मैंने रखा 2 साल कंटिन्यू। 2 साल जी कंटिन्यू रखा, फिर छोड़ दिया? फिर गया मैं रहब सर। रहब गए? कहाँ पे? हेडवन में रहब गए। फिर एडमिट था वहाँ 10 दिन। ठीक। वहाँ से आया तो हो गया लगभग 1-2 महीने। 2 महीने के बाद फिर मैं फिर से मिला फ्रेंड्स के साथ। हो गया फिर से शुरू। फिर से आदत हो गई? जी सर। ओके। अब इस टाइम जो मैंने सब कुछ, फ्रेंड भी ब्लॉक किए, नंबर भी ब्लॉक किया ना, मैं सर किसी के साथ चलता हूँ। अब मैं ठीक हूँ। अब ठीक हो? जब तक कांटेक्ट में है सर तब तक लड़का नहीं छोड़ता। आपको छूट जाती थी तो क्या होता था बेटा? दर्द होती थी, जिसमें ऐसे होता था। कभी होती थी, दर्द होता था, और क्या होता था? आंखों से आंसू, नाक से पानी बहता था, ऐसा होता था? चलना नहीं पड़ता था, चल नहीं पाते थे, लूज मोशंस होती थी? जी सर। वॉमिटिंग जैसी लगती थी? वॉमिटिंग लूज मोशंस होती थी। ओके। One lakh 8,000 males and 36,000 females are found to be using cannabis in J&K. 5,34,000 males and 8,000 females were using opioids. 1,60,000 males and 8,000 females were using various sedatives. Significant number of males and females were addicted to cocaine, amphetamine type stimulants and hallucinogens. Reasons driving the youth of Kashmir towards drug addiction are multiple, but the easy availability of substances tops the list. Hardly a day passes when police doesn't put out details of drug peddlers and narcotic substances recovered from them. A general sense of hopelessness in Kashmir has also pushed a big chunk of Valley's youth towards drug addiction. Thousands have been killed in Kashmir since militancy erupted in early 90s. Scores of protesters also died in police firing during the cycles of unrest in 2008, 2009, 2010 and 2016. The protracted conflict in Kashmir has taken a huge toll on the mental health of the people,
with health experts calling Kashmiris a traumatized population. This 27-year-old was a chronic stone pelter during 2018. When stone pelting and street protests were the order of the day in Kashmir. The same year he was addicted to heroin. He used all his saving to buy drugs. He sold his 2 cars and borrowed money from friends and family. But when nothing was left, he snatched a gold chain of his mother for buying drugs. In 2019, he left Kashmir for Haryana, where he worked for 2 years. This helped him to escape from the daily dose of violence in Kashmir and kept him away from drugs. But his past returned to haunt him upon his return to Kashmir in 2020, when a PSA or a Public Safety Act was slapped on him for his previous stone pelting cases. He was jailed for 1 year. After his release, a strong urge forced him to take recourse of drug addiction. आगे आगे मैंने फाइल स्टार्ट किया 1 साल, कम से करीबन 1.5 साल के बाद फाइल से फिर ये नहीं, उसके बाद मैंने इंसुलिन लिया है, इंजेक्शन हाँ, हेरोइन का इंजेक्शन लिया। हेरोइन ये आपको इजीली मिलता था यहाँ पे, या इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ती थी? ना, सबसे ये बात है कि जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है, पुलिस करनी चाह रही है, उनमें से कुछ लोग ऐसे होते हैं कि एक साइड से पकड़ते दूसरी साइड से देते हैं। एक साइड से किसी ड्रग पेडलर को पकड़ा, दूसरी साइड से उसको 5,000, 50,000, 10,000, 15,000 ले लिया तो छोड़ दिया। कुछ अफसरात ऐसे होते हैं, अगर उनको 50 लाख भी देंगे वो FIR के बिना नहीं छोड़ते। एक इनसे भी मिलता था। उमूमन अगर देख लेंगे हम 50% से ज्यादा, 50-60% से ज्यादा ड्रग इनसे ही लेते हैं लोग, जो ये एक जब्त करते हैं। उसमें से अगर मेरे ख्याल से मैंने भी अब मेरे ऊपर भी कम से कम 4 FIR लगे हुए, मैंने भी बहुत कुछ सीखा इनसे। अगर इनके पास जब्त माल होगा 4 केजी में से 1.5 केजी दिखाएंगे, 1.5 केजी में भी मेरे ख्याल से 75% कुछ और डालेंगे, हेरोइन के बदले कुछ पाउडर डालेंगे, वो भी निकालेंगे, यानी कि प्योर उसमें रहेगा 50 ग्राम, 100 ग्राम, 200 ग्राम, बाकी बिक्री करते हैं। पापा का रसूख बहुत अच्छा था, या अब पापा से सब मुझे भी जानते थे। पापा का कोई दोस्त था, मैंने बोला ऐसी प्रॉब्लम हो गई, पापा को नहीं बताना, फिलहाल 50,000 चाहिए, 20,000। किसी को पता नहीं था ना कि मतलब ऐसा मसला है, ड्रग ये नश करानी बे सीरियस दिवान पता तिमन पता लज पत दिस कंसे पत इंसान अख वक्त वादा होता इंसान गसान चोर करनस पे, चोरी भी कर ले, चोरी करने पे मजबूर। आपको कभी इस तरह की हालात हुई कि आपने सोचा अब पैसे नहीं है, मैं कुछ और स्टेप उठाऊंगा? पैसे जब पूरे खत्म हो गए उसके बाद मैंने जमीन भेजा, जब वो पैसे भी खत्म हो गए गाड़ियां भेजी, जब वो पैसे भी खत्म हो गए लोन लिया, कंजप्शन लोन लिया मैंने, जब वो पैसे भी खत्म हो गए उसके बाद मैंने मम्मी की चेन ली। मुझे याद है चेन मैंने खींच ली, या कोर छासान कोर वो किने फेस छासान सो फजो सुरु कटम थाबी एलमे लोन सुरु स्नैच किया। हां, जिंदगी छन ये ड्रग जिंदगी छन। घर वाले क्या बोलते थे उस वक्त जब आप ये हालात आपके थे कि अपने माँ से चेन स्नैच की? घर वालों को अमूमन मेरे ख्याल से 1.5 साल के बाद पता चला, 1.5 साल के बाद पता था उनको। जब मुझे नींद आ रही थी, ऐसा हो रहा था, वैसे हो रहा था, खाने पीने की कमी, कभी खाना मैंने खाया ही नहीं, बाहर से सब कुछ लिप्टन चाय खाली मीठा खाता था मैं। उनको फिर मैं कसम कुरान करता था, मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ, मैं वैसा नहीं कर रहा हूँ। फिर मैं बोला, फिर मैं मतलब अपने हिसाब से घर वालों को बोला था, मैं ऐसे ही चरस सिगरेट पी रहा हूँ, बाकी कोई ड्रग्स वगैरह ये भी छोड़ दूंगा, वो ऐसे करूंगा जब तक जिंदगी तबाह हो। The number of patients showing signs of depression and anxiety have increased drastically. Doctors say the capability to cope with trauma varies from individual to individual. Those who are traumatized for the first time are in a better position to cope with it, but the coping mechanism gets weakened for those subjected to a series of traumatic experiences. According to hospitals in Srinagar, people are now showing increased signs of anxiety and increasingly self-medicating with antidepressants. तो जब भी हमारे पास ये पेशेंट्स आते हैं तो तब तक काफ़ी लेट हो चुका होता है,
तो डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स फाइनेंशियल, समटाइम्स लीगल, ऑक्यूपेशनल तो होती हैं। तो यूजुअली हमारे पास ये विड्रॉल्स में आते हैं। विड्रॉल्स में इसकी जैसे हेरोइन के कुछ विड्रॉल्स होते हैं कि बहुत ज़्यादा तोड़ लगना, पेन, रेस्टलेसनेस, स्लीप डिस्टर्बेंसेस। तो हमारे पास जब ये आते हैं तो वो यूजुअली मैनेज इसी विड्रॉल पार्ट को हम पहले मैनेज कर लेते हैं विद मेडिकेशन, ताकि जो पेशेंट है उसको हम एश्योर कर लें कि जो विड्रॉल पार्ट है ये ओवर हो जाएगा, ये जल्द से ख़त्म हो जाएगा, और विड्रॉल में जो डिस्कम्फर्ट होता है इंडिविजुअल का, पेशेंट का, उसको हम कम कर सकें यूजिंग डिफरेंट पेन किलर्स, या यूजुअली जो हमारे पास आजकल हमारे यूटी में मेडिकेशन है दैट इज बुप्रोपियोन कॉम्बिनेशन। तो उसकी वजह से इनके जो विड्रॉल्स कम होते हैं, क्रेविंग कम होती है, तलब कम होना, एंड पेशेंट ग्रेजुअली फिर उसके साथ हम फिर एक रैपो बिल्डअप कर लेते हैं। हमारे पास जो टीम है, साइकियाट्रिस्ट, सोशल वर्कर है, काउंसलर्स हैं, या डॉक्टर्स हैं, या नर्सेस, या बाकी रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं। तो वंस वी बिल्ड अप दैट रैपो, फिर हम उनके फैमिली मेंबर्स को इन्वॉल्व कर लेते हैं। विड्रॉल पार्ट को ओवर करके फिर हम उनके लॉन्ग टर्म फार्माकोथेरेपी पे फोकस कर लेते हैं। लॉन्ग टर्म फार्माकोथेरेपी मीन्स कि विड्रॉल पार्ट इज ओवर, अब उनको फिर से ये नशा वापस नहीं आना चाहिए। ज़्यादा क्या वजह है कि लोग इसका शिकार होते हैं, खासकर जो यंगस्टर्स है, क्या वजह है? मोस्टली इट्स द अवेलेबिलिटी, प्लस काफ़ी ज़्यादा मेंटल हेल्थ इश्यूज़, काफ़ी जो आपको पता ही है कि हालात क्या क्या रहे हैं। एक तो काफ़ी ज़्यादा पॉलिटिकल टर्माइल, उसके साथ साथ फिर जो भी मेंटल हेल्थ इश्यूज़ आ रहे हैं जैसे एंजाइटी, डिप्रेसिव सिम्टम्स, फ्रॉम लास्ट कपल ऑफ ईयर्स अनएम्प्लॉयमेंट भी काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं। तो यूजुअली उस जो मेंटल हेल्थ इश्यूज़ उनको कम करने के लिए, टू कोप अप विद दोज मेंटल हेल्थ इश्यूज़, इंडिविजुअल गोज इनटू ड्रग्स। तो वो पहले तो उसको वो मूड इनको करवा लेते हैं, बट ग्रेजुअली ही लैंड्स इनटू दिस डिपेंडेंस या हैबिचुअल स्टेट। फिर वो इससे निकल नहीं पाता है, उसके लिए फिर डिफिकल्ट रहता है इससे निकलना। तो हाँ, उनको थोड़ा बहुत शक था मम्मा, क्योंकि जो मेरी मम्मा है मतलब वो, उसको पता नहीं था ये क्या है। एक बार उसने मेरे को देखा, मतलब पॉकेट में मेरे को था, तो उसने ऐसी स्मेल लिया था, तो वो सारा उड़ गया था, क्योंकि जो हीरोइन होता है वो पाउडर जैसी होती है। तो फिर जब मैंने मम्मा को बोला ये आपने ये कहाँ रखा, उसने बोला ये क्या था। मैंने उसको बोला कुछ नहीं मेरे को दो, क्योंकि वो मेरे को महंगा था, क्योंकि इसकी रेट ये बहुत महंगा है। मैंने वो लाया था 2000 में, थोड़ा सा था। तो फिर मैंने मम्मा के साथ लड़ाई की, तो उसको फिर पता चला, जब मैंने उसके साथ लड़ाई की वो उसको पता चला कि ये कुछ है, ड्रग है। मैं उसको बोला ये ड्रग नहीं, ये मेरे को फ्रेड का था। तो फिर वो मेरे पीछे आ रही थी, तो मैं एक बार वॉशरूम में था, मैं इंजेक्ट ले रहा था, उसको चेक कराया वहीं पे, उसने मेरे को देखा, मतलब ये कुछ ड्रग लेता है। मैं स्टार्टिंग में हमारा बिजनेस है, तो सारा जो भी मतलब पैसे थे अबू के, मतलब बिजनेस में वो सब मैंने इसी पे खर्च किए, सब कुछ। तो जब मैं यहाँ पे आया लास्ट टाइम, मेरे को अपनी अकाउंट में पैसे थे, तो मैं फेयर बोलूँगा, मैंने मतलब जो मेरा अपना बैंक का अकाउंट था उसमें अबू मतलब पैसे डालते था, तो मैंने वो पूरा जीरो किया, पूरे पैसे जीरो पे। और मेरे पास मतलब मैं उस टाइम 10th क्लास में पढ़ता था, जब मैंने मतलब KTM बाइक लाई थी घर वालों ने मेरे को, तो वो उसके सेकंड हैंड मैंने लाई थी, वो पैसे भी उसी में चले गए। उसके बाद मैंने सेंट्रो लाई थी, वो भी उसी में चला गया। उसके बाद मैंने हाँ गाड़ी लाई थी सेंट्रो, वो भी उसी में चला गया था। जी सर जी, मैं शुक्रगुजार हूँ। मतलब जब मैं यहाँ पे आया पिछले थर्सडे को, जब मैं यहाँ पे आया, तो पहले 2 दिन मेरे को विड्रॉल्स यहाँ पे भी आए, मेरे को बहुत पेन हुई। तो इन्होंने यहाँ पे मेरे को इंजेक्ट लिया और यहाँ पे दवाई दी। तो मैं जो यहाँ पे डॉक्टर्स हैं, तो तीसरे चौथे दिन में मेरे को बहुत ज़्यादा फर्क। आज मेरे को यहाँ पे 12वां दिन है। मैं अभी नॉर्मल हूँ, जैसे मैं था ड्रग से पहले वैसे ही। मतलब मैं चाहता हूँ। पहली बार आपने 12 दिन का ब्रेक लगा है जब से आपने ये ड्रग्स का सिस्टम स्टार्ट किया था? जी सर, ये ब्रेक कभी नहीं लगाया था, बीच में ब्रेक मैंने कभी नहीं लगाया था। मतलब खाली मेरे को ये 12 दिन हो गए ब्रेक। But even as the problem of drug addiction is spreading fast across Jammu and Kashmir, many people and NGOs are coming forward in helping people to give up drug addiction.
For the last 10 years, Ashik Hussain has been helping substance abusers across Srinagar to get rid of addiction. The drug addicts identified are provided with fresh syringes and needles for preventing the spread of diseases like AIDS and hepatitis. This is followed by oral medications. It's a time-consuming process taking several months altogether, but the effort is worth it. Of more than 1,000 people Ashik and his team have dealt with, 700 have already left drug addiction. प्रोजेक्ट दिया है मतलब आईडी यूजर का कि इस श्रीनगर में आईडी यूजर कहाँ है, खाली आईडी यूजर जो इंजेक्टिंग ड्रग यूजर है, नॉट ए ऑर्डर, क्योंकि एचआईवी रुकाने के लिए। एचआईवी इससे ज़्यादा खतरा है क्योंकि शेयरिंग भी करते हैं, एक ही नीडल दोबारा इस्तेमाल भी करते हैं, 2-3-4 बंदे करते हैं, मतलब इंजेक्टिंग इकट्ठे ही। मेरे पास सीरीज नहीं है, नीडल नहीं है, मैं इस फ्रेंड के साथ करता हूँ। इसी वजह से उन्होंने प्रोजेक्ट हमको दिया कि इनको नीडल सीरीज एक्सचेंज प्रोग्राम करो, मतलब इस एरिया में यहाँ पर क्या एक्टिविटीज चल रही है। इसी से फिर आहिस्ता 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 हमें इनपुट मिल गया कि यहाँ पर इतने ड्रग यूजर है, इतने काम कर रहे हैं। उस साइड में जब इस एरिया में हमने एक ड्रग यूजर को पकड़ा, मतलब बात किया, उन्होंने फिर सब कुछ बताया कहाँ पर एक्टिविटीज हो रही है, किस एरिया में कितना एक्टिविटीज हो रही है। फिर जब आपने ऐसे ड्रग यूजर्स को आइडेंटिफाई किया, उसके बाद आपने क्या? उसके बाद हमने रजिस्ट्रेशन किया हमारे पी में, रजिस्ट्रेशन मस्ट है, उसको हमने रजिस्ट्रेशन किया। फिर हमने उसको एक्सचेंज प्रोग्राम किया कि नीडल सीरीज, कि अगर मैं इसको बोलूँगा आप छोड़ो, ये नहीं छोड़ेगा। हमने फिर इसको दिया, मतलब नौकू की गाइडलाइन, नीडल एक्सचेंज प्रोग्राम, नीडल सीरीज एक्सचेंज प्रोग्राम। अगर आपके पास आज 2 इंजेक्शन करने हैं, ले ले 2, कल और 2 करने, कल जाएंगे 2 वापस लेंगे। एक्सचेंज प्रोग्राम चल रहा है, इससे एचआईवी भी खतरा कम हो जाता है और हेपेटाइटिस भी खतरा। फिर आ गया नौको ने फिर भेजा ओएसटी, ऑरल सब्स्टिट्यूशन थेरेपी, जो मुंह से खाते थेरेपी। एक पेशेंट 2010 में आ गए थे, आ गए। फिर हमने इन पेशेंट को उधर रेफर किया, मतलब जो ये ड्रग उन्होंने इंजेक्ट किया अब उसे मुंह से मिल रहे हैं। जो हमारे टारगेट है 900 पेशेंट्स है, क्योंकि हमें टारगेट दिया, क्योंकि हम नीडल सीरीज एक्सचेंज प्रोग्राम कर रहे हैं। ठीक है, वहीं से फंड्स आ रहे हैं। 500 इस वक्त हमें ओएसटी पे है, ऑरल सब्स्टिट्यूशन थेरेपी पे। 250 रिहेबिलिटेट हो गए, पूरा डोज उनको फिक्स हो गया। अब जो 250 है वो ले रहे हैं, उसका अभी डोज पूरा फिक्स नहीं। तो इनको आप जबरदस्ती नहीं जबरदस्ती नहीं, जबरदस्ती नहीं। Hilal Ahmed is one of the beneficiaries. The fruit seller in a Srinagar market is a busy man these days, but it was not the case always. A drug addict for 10 years, he spent all his money buying drugs and took an additional loan of 6 lakh rupees. To fight the craving for drugs, he had to lock himself up in his home for 1 month. Family and friends supported him in his de-addiction journey. मुझको हो गया 2 साल लगभग ये दवाई खाते हुए। ये दवाई मेरी को बेटी भी हो गई, फैमिली वाला हो गया, दिमाग में जहर आ गया, इसलिए मैंने वो छोड़ दिया सब। यानी 10 साल अब ड्रग्स? हाँ, 10 साल मैंने ड्रग्स 2012 से मैंने लिया है। 2012 से पहले लेता था मैं ट्रोमोडाल इंजेक्शन, उसको छोड़ के फिर मैं यही लेता था। क्या लेते थे? हेरोइन लेते थे सर। तो ये आप सिरिंज लगाते थे? सिरिंज लगाता था सर, मैं इधर सिरिंज लगाता था इधर। फिर जब ये आदत आपकी छूट गई, वो कैसे हुआ? उसमें कितना वक्त लगा और क्या तरीका? उस टाइम सर मैं जब पहली बार मेरे को मेडिसिन दी उधर जेवीसी हॉस्पिटल वालों ने, इन्होंने मेरे को मेडिसिन दी, उस टाइम मुझको 10 दिन रखा घर में, कमरे में बंद, छोड़ते नहीं थे मेरे, उधर नहीं इधर नहीं। फिर आस्ते आस्ते तोड़ आती थी, पसीना आता था मेरे को, रिएक्शन होती थी, वो ऐसे थकावट आती थी। घर वालों ने भी साथ दिया, ऐसे मत करो, वो आस्ते आस्ते सब छूट गया। फिर मैं 2 महीने के बाद इधर आ गया काम पे। 2 महीने में घर में ही था ऐसे ही, 10 दिन लेकिन पूरा कमरे में बंद था मैं। उस टाइम में 10 दिन में पूरे कमरे में बंद था, फिर हो गया, आस्ते आस्ते छूट गया। Kashmir is faced with a lot of challenge. Years of violence and turmoil have jolted the society, but perhaps the biggest problem right now is the rampant drug addiction.
clearly a collective effort on a war footing is needed to deal with the situation. But it will be a time-consuming process, and everybody will have to play a role in that. In Srinagar with Haris Togu, Zafar Iqbal from Mojo Story. It's great to see you here. Thank you for watching our work. If you haven't subscribed yet, don't forget to click the bell icon and subscribe to Mojo Story and support independent, robust journalism.